Hello everyone, this is Solo Rider here. आज है सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ समर टिप्स. होप आप लोगों को पसंद आया होंगे जो अभी तक वीडियो मैं बनाया, और स्पेशली ये वीडियो जो है थोड़ा ट्विस्ट रहने वाला है क्योंकि ये वीडियो रहने वाला है इंग्लिश में, बिकॉज आई वॉन्ट दिस मैसेज टू बी पास नॉट ओनली फॉर हिंदी स्पीकिंग पीपल बट फॉर द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी बट अंडरस्टैंड इंग्लिश. इंडिया में बहुत से लैंग्वेजेस है, तो हर लैंग्वेज में नहीं कर सकता, तो इंग्लिश का में जो समझ सकते, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रहेंगे. तो लेट्स बिगिन. आज का टॉपिक है डोंट बी ए कॉपी कैट. कॉपी कैट किस लिए? क्योंकि आजकल लोग क्या है, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या मोटो व्लॉगर्स करते हैं वो लोग बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं. ये कहीं को होता मतलब जो भी राइडर देखते, जो भी आप जिसको फॉलो करते हो, उन्हें जो भी टैक्टिक्स यूज़ करता वो आप फॉलो कर लेते. तो एक मेजर चीज़ जो मैं देखा वो लोग करते, और जो अपन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा लोगों का नहीं कर सकते अपन, मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर सकते, वो है wetting your riding gears or your bandana with water or cold water and riding in the hot sun. तो इसका रीज़न क्या है कि बॉडी पे जब आप ठंडा पानी डालते, थोड़े लोग हम जो गार्डनिंग के पाइप से थे उससे डाल लेते, या ठंडे पानी की बॉटल ना डाल के चलाते, और ताकि वो लोगों को ठंडा फील हो थोड़ी देर तक डाल के चलाते, क्योंकि उनका बॉडी जो है कूल होना थोड़ी देर के साथ, थोड़ा उनको ठंडी हवा लगना. ये सही है, बट इसके बहुत से वेरिएशंस है. हर पहली चीज़ है दाल पानी जब आप डाल के आपके राइडिंग गेयर्स पे या आपकी जैकेट पे डाल के चलाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल राइडिंग गेयर इज इंपॉर्टेंट, ये आप सीधा अपने कपड़ों पे मत डालो, ये एक चीज़ ध्यान रखो. राइडिंग गेयर पे जब डाल के चला रहे, जब जैकेट है, जब मेश की जैकेट है, कोई भी जैकेट है, उस पर आप डाल के चला रहे, ठंडा फील होता है और थोड़ी देर में वाटर एवोपरेट होता. ये बात बिल्कुल सही है. So, wetting your bandana and wearing under your helmet, or putting water on your jacket and riding for few kilometers is not so advisable, because it happens that it gets evaporated in few minutes or few kilometers, and then it is not effective. But it is only suitable for the places where there is extreme hot weather, like Rajasthan and major part of the North India, Delhi, Rajasthan, Haryana. There the sun and the temperature is almost 45 to 50 degrees. There if you pour water on your body and ride it, it will evaporate sooner than you expect. The moment you put the water, it might evaporate within a couple of minutes. But the people we are in a country where there is a diverse climate throughout the parts of India, throughout the map, throughout the country. Wearing a wet bandana on your head and wearing a helmet on top of it, or wetting your riding gears with it, it is not advisable, because it is not suitable for every type of body. Not everyone body adapts to the cold water the way other body may. And one more thing is that water evaporates in hot summer condition where the temperature is extremely high, like 45 to 50, 55 degrees. There the water evaporates within minutes, and there this tactics might work for a couple of minutes. So why take danger when it is working for a couple of minutes itself? The people who are showing what they're doing in North India applicable for the people who are riding in hot sun in South India, because in South India we have nature in abundance. We have greenery, we have mountains, we have shades, we have weather changing every 50 kilometers, not even 100 kilometers. Every 50 kilometers in each state, in city, each town the temperature keeps changing. So when you put water on your jacket or your riding gear or your bandana, and when you ride in South India or places where there are ghat region and where there are mountainous region, there it might not be applicable, because the as the altitude increases, the temperature decreases and you face the cool breeze. And when you go in shades, or when you go in a place where there's a lot of trees and greenery, though it is summer, but still you will get a cool breeze, you will get a sense of cool weather even in hot summer. So during that time, what happens is when you wet your body with ice cold water, and if you drive through the patches, that might have a negative impact, and that might cause you many diseases, like you might get influenza, you might get. So कई बार ऐसा होता है कि जब अपन altitude पे जाते हैं, अच्छे ठंडे जगहों पे जाते हैं, तो सर्दी के वजह से अपना सीना पकड़ सकता है, आपको सर्दी जम सकती है आपके सीने में, आपको कोल्ड वेदर हो सकता है. तो इस बात से वो एडवाइजेबल नहीं है कि आप साउथ इंडिया में भी वही चूज करो जो आप नॉर्थ इंडियन राइडर्स को देख रहे हो. तो एवरीवेयर एवरीथिंग इज डिफरेंट, एंड हर किसी की बॉडी अलग अलग रहती, जो आप सेम चीज़ कॉपी नहीं कर सकते. जो उनके वहाँ से काम करे वो आपके यहाँ से काम नहीं करेंगे. सेकेंड थिंग, स्टे हाइड्रेटेड. Or hydrated in a right sense, that is very necessary in summers when you're riding, or when you're doing a summer ride in a hot sun. Let it be any climate, but whenever you're riding in a hot sun,
it is very necessary to avoid few things: carbonated drinks, sugar coated drinks, and soda. These three drinks don't hydrate your body. They in fact they will be harmful for your body. Carbonated drinks and soda drinks are not advisable while riding, because while riding you try to eat light and most of the time your stomach is empty. So having soda drinks on an empty stomach is not advisable at all, whether riding or non riding. So carbonated drinks and soda drinks are not advisable. It is advisable to drink natural juices like Mossambi, tender coconut, because in South India, tender coconut is available. In North India, buttermilk is available, and other natural juices like watermelon juices, sugarcane juices. All types of juices are available in various parts of the country. Whichever juice is available, which is clean, hygiene, and it is available through a natural resource with less of sugar, that is advisable while riding in hot summer. Also, it is advisable to stop for a minute or two or 30 to 60 seconds and have a normal temperature water. Even if you want to have a cold water, stop for in a shade for a couple of seconds, stop for some time, remove your helmet, take a fresh air, and then consume water. Because as per research, so there are less chances of heat stroke or heart attack due to this. It's not completely proven, but there is a marginal effect which happens due to cold water. When you drink a cold water, when you drink cold water soon after coming from hot sun, that might cause you heart stroke. So what happens is, whenever you drink a chilled, ice chilled cold water or a drink soon after coming out from a hot sun, your blood circulation contrasts. And this blood circulation majorly affects your stomach. The circulation which happens in your stomach, that is contrasted, where your stomach might contrast and you might feel acute pain in your stomach. So to avoid that, it's better to wait for a minute or two and then and have cold water. I do understand that after excessive heat, right in heat and in a hot summer, you might feel thirsty, but it is advisable to just stop for 30 to 60 seconds at least and then have water और जूस. सो ये था मेरा कि पहला पॉइंट है कि आप अपने राइडिंग एज को कच्चा मत करो ताकि आपको कोई इफेक्ट हो जाए, क्योंकि जहाँ जो अपनी बॉडी है, जो आपका आसपास का क्लाइमेट है, वो हिसाब से देख के आप उसको एक्ट करो. और दूसरा है कि आप जो है पानी, ठंडा पानी या कोई भी पानी या ठंडा जूस, कोई भी जूस है जो है, थोड़ा 30 to 60 सेकेंड्स वेट करके पियो तो आपके वास्ते बेहतर है. नहीं तो आपकी जो लॉन्ग राइड जो प्लान है वो शॉर्ट राइड में हो जाएंगे और आपके राइड का एक्सपीरियंस के बदल एक नेगेटिव एक्सपीरियंस या एक राइड स्टॉप करने पे भी विजिट कर सकता. तो ये थे मेरे पॉइंट्स और होप आप लोगों को पसंद आया होगा. थोड़ा चेंज था इसमें, तो बताओ मेरे को कैसा दिखा, इन्फॉर्मेटिव दिखा है नहीं. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी सेफ, राइड सेफ.